Hello children, class 10, test series 2023-24 and the subject is social science, set B. Let us move to the section A, all are MCQ type of questions. Take first question. First question, consider the following statement regarding Dandi March organized by Mahatma Gandhi and identify the incorrect one. Here we have to actually take out the incorrect one from the following. Four options are given to us, and out of which the correct option is option D. Why option D? Mahatma Gandhi accompanied 72 of his trusted members. So when Gandhiji started Dandi March, at that time he started like 72 of his trusted members were there in this Dandi March, and he started. Let's move towards the second question. In Western Rajasthan, today plenty of water is available due to why there is a plenty of water available, especially in Western Rajasthan. And the reason is option, okay, the option B is the correct option or correct answer. One, because perennial Rajasthan canals are being made there. Perennial, the meaning of perennial, it means that the water available is there throughout the year. Throughout the year, when water is available in any canal that is or any river that is called as a perennial rivers. So here the perennial canals are being made where the availability is there throughout the year, especially in western Rajasthan. Let's turn towards the third question. And the third question tells you which of the following statement is correct. Four options are given to you, and out of which we come to the conclusion that first option, that is, service sector contributes more than half of the GDP of India. And this is very true, children. Service sector, which is also called as a tertiary sector, contributes half of the GDP, more than half of the GDP of India. It means that more than half of the GDP is been contributed by the tertiary sector that we also call as a service sector. As you know, in the service sector, like all the job people, those who do the job or those who provide all sort of services, even the teachers also comes under the service sectors. Let's turn to question number 4. It is an assertion reason type of question. Now what the assertion is telling to you or asking you or stating you. Forest plays a key role in the ecological system. It means forests play a very important role to balance the ecological system or to maintain the ecosystem. And the reason which is given to us, forests are the primary producers on which all other have living beings depends. And this is very true, children. Because of the forest, are actually forests are the primary producer on which our life depends, human beings' life depends wholly and solely. And because of this only the ecological balance is there. Both are complementing another, and that is why option A is the correct answer. It means both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of the assertion A. Let's turn to question number 5. Now, question number 5 tells you different arguments are usually put forth in favor of and against of power sharing. Okay, a lot of arguments are there about in favor of and in against of power sharing. Identify those
which are in favor of power sharing, and select the answer using the codes given below. So out of these codes which is given on your screen, what you have to do, you have to select the codes that favors the power sharing, that favors the power sharing. Out of four options, the correct answer is option A. Now, in the option A, code A, code B, code D, and code F is there. So let's turn why power sharing is favored here. So the option A is power sharing reduces conflicts amongst the different communities. And this is very true, children, because power sharing reduces the conflicts. We reduce the conflict when we share our power. Option B. So why the option B is there? Power sharing decreases the possibility of arbitrariness. And this is very true. It reduces the arbitrariness. Option D. Why option D is there? Because power sharing accommodates diversity. In our country also, and in Belgium also, we have seen that the power sharing accommodates various diverse culture people together. It allows to live together. Option F. Why option F? Because power sharing promotes people's participation in the government. So we have seen that the government has been formed because of the promotion, because of the participation of the people. Here, the common people plays a very vital role. So all these statements which I marked on the screen, A, B, D, and F, they favors the power sharing. Question 6. Now here the image is given to you. Following image shows new laws that were made in Russia in 2005, giving powers to its president. During the same time, the United States president visited Russia, studied the given picture, and answered the following question. Which amongst the following statement appropriately describe the given picture? So the given picture is shown on the screen, and out of this four options, we have to tell what this picture implies to us. And the correct option is option D. It means that concentration of power under the one center undermines the concept of democracy. Concentration of power under one center determines the concept of democracy. It means that in the democracy, we have always seen the concentration of power is under one central hand, and the central government plays a very important role. And the central government's role is very, very important while taking the decisions. Let's turn to question number 7. And again, question number 7 is all about assertion and reason. So, assertion tells you sex selective abortion led to the decline of sex ratio in India. Again, I'll repeat the assertion. Sex selective abortion led to the decline of sex ratio in India, and the reason is given here. Desire for the male child makes Indian families abort girls. Now, four options, as you know, and out of which option A is the correct answer. The question assertion is telling you why there is a declination in the female sex ratio, why we are aborting the female child. And the reason is that as India is a patriarchal society where the male childs are usually given more preference in the families, that is one of the reasons why we abort girl child. Okay. So the answer is option A.
Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. I hope you have understood that option A we have to select here because both are complementing each other. Let's turn to question number 8. Find the incorrect option from the following. And the four options are given to you, such as bank accept, deposit and also place an amount as interest. People's money is saved with banks. Option C, banks provide loans only to profit-making business. And option D is it is easy for the individual to get credit who have savings and current accounts in the bank. Now, out of these four options, option C is incorrect option because it is asked to us to select the incorrect option. And the incorrect option is bank provide loans only to profit making business. This is strong children because banks has a tendency that they have to provide loans to all sort of people, not only to profit making businessmen. Okay, so option C is the correct because it is an incorrect statement. Banks are not biased to anybody. They provide loans to all the sections of the society. Let's turn to question number 9. And the question number 9 tells you which of the following is incorrect regarding a federal government. Regarding a federal government, we have to select any one incorrect statement. And that incorrect statement is option B. Why option B? Because federation has only one level of government. No, in federal countries, various type of state governments are existing. But here it is mentioned, if federation has only one level of government. If there is a one level of government, it must be a unilateral government. It must be a unilateral government and it is asked to us, okay, if a incorrect statement is that federation has only one level of government. In federal government, always state governments are existing. There is no only one type of government. One type of government is also called as a unilateral type of government. Okay, so because of this, as it is mentioned, only one level of government. That's why we are considering this as a incorrect statement, not true statement. Okay. Now again the image is there in question number 10. Kindly observe this picture image carefully. Consider these statements about the given image. Okay. Consider these images about the given images. Now when we are considering this, just see all the option title of this caricature. Okay, and observe after observing we are coming to the option. Four options are given to us, only one, two only, both A and 2, and the last one is 1, 2 and 4. Now why 1, 2 and 4? Why the option 1, 2 and 4 is the correct one? Because the first option, okay, the first option, that is the title of this caricature, is the Club of the Thinkers. All these people, those who are there in this image, they are the thinkers. They are thinking something. Okay, they are thinking something in this image. Okay, and as it is said to us in option 4, that the second and the fourth is there. So let's see why the second option is also correct, because the plate on the left bears this inscription. The most important question of today's meeting: how long will thinking be allowed to us? Okay, so how long? Because some of the people, they close their mouths. Okay, so how long they will think, that is also given to us. Option 4. Why the option 4 is there? Because this caricature was created in the year 1820. So that's why option
4 is the correct option when we observe this picture. Because in this picture, if you observe, the thinkers, they are sitting together. Some of the thinkers, they are not being allowed to speak anything. Okay? So they are thinking. The most important question of today's meeting is how long will thinking be allowed to us? So they are thinking for a long time. And why? Because this caricature is made or created in 1820. Let's turn to question number 11. When we are observing question number 11, the major benefit of globalization. Now, what is the major benefit that we get from the globalization? Is four options are given to us. And the correct option is option B. Why the option B? Because option B increased opportunity for the forest investment. So as you already know that because of globalization, we are getting the opportunity and many foreign investors, they are coming to our country. This is one of the benefit that we get because of the globalization. Let's turn question number 12. Okay. Now, what is there in question number 12? Which of the following statement is not true about the democracy? So why, which is the following statement? Four options are given to you. Now, out of this four, one you have to select that tells you this is not good about democracy, not true about the democracy. And that is, it is the option B. It is free of corruption. Now, repeatedly in the explanation, we are coming to the conclusion, yes, there are a lot of flaws are there in democracy, and it one of the flaw is corruption. So it is next to impossible that democracy do not have the, it is a free of corruption, okay? Some kind of a corruption is always being seen there in the democracy, and this is a flaw of democracy, which we have seen while explanation also. Okay. Let's turn to question number 30. And the question number 13, how was the Relax Act of 1919 perceived in terms of fundamental rights and civil liberties by the Indian? How was the Relax Act of 1919 perceived in terms of fundamental rights and civil liberty of by the Indians? Okay, so in the Relax Act of 1919, do you really think that the we perceive the fundamental rights and the civil liberties by the Indians through the Relax Act? Okay, and the option is B. Why option B is there? It was considered as severely curtailing the rights to the personal liberties. Because as you know that in the Relax Act, it was continuously mentioned that any suspicious person could be arrested by the British government without any trial. It will be deported to jail, okay, for around 2 years. So that's why we are considering that it was considered as severely curtailing the rights to the personal liberty. It means that the personal liberties of the common people was not given to the people of India because of this Relax Act, which was passed in the year 1919. So, children, let's turn towards question number 14. Now, what is there in question number 14? So, question number 14 tells you about most of the agricultural laborers like Mohan depend upon loans for informal sector. Which of the following statement about this sector is correct? आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है इन चारों में से, ठीक है? अब जब हम इन चारों को जब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, तो जब ऑब्जर्व करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि जो ऑप्शन सी है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लोन टू द बोरोवर इज क्वाइट हाई। तो जब भी हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करेंगे तो हमें हमेशा रियलाइज होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो होता है वो बोरोवर से ज्यादा अमाउंट मतलब इंटरेस्ट लिया जाता है। द बोरोवर इज क्वाइट हाई। मोस्ट ऑफ द पीपल in informal sector or the most of the people
दे वांट टू बोरो द मनी थ्रू द इनफॉर्मल सेक्टर। हम फॉर्मल सेक्टर के थ्रू कभी पैसा इजीली लेना नहीं चाहते, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इजीली आपको लोन मिल जाता है। ओके, कोई भी आपको पैसा दे देता है, मनी लेंडर देता है, आपकी फैमिली के लोग देते हैं, और ज्यादातर लोग इनफॉर्मल से ही लेना पसंद करते हैं। तो ये चार ऑप्शन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लोन्स टू द बोरोवर इज क्वाइट एंड, मतलब मैक्सिमम पीपल दे टेक्स द लोन थ्रू द इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल ज्यादा हिंदुस्तान में चलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रिफर टू टेक द लोन फ्रॉम द रिलेटिव्स एंड द मनी लेंडर्स rather than taking from the bank। ओके, और इसका परसेंटेज क्वाइट हाई है हमारे देश के अंदर। Turn to question number 15. Okay, when we are talking about question number 15, there are two statements given below. Okay, about the print revolution. तो जब हम print revolution की बात करते हैं, हमारे पास assertion और reason दिया गया है। जब हम assertion को observe करते हैं, तो उसमें दिखते हैं the distribution, application, okay, distribution and application and preservation of the knowledge were fundamentally altered with the invention of printing। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितनी भी नॉलेज है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज हुआ है, जितना भी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हुआ है, बहुत सारा नॉलेज को हमने प्रिजर्व भी करके रखा है। इस मतलब ऑल दीज थिंग्स ये हैपन हुआ बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। ओके, फंडामेंटली ऑल्टर्ड विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। जैसे जैसे प्रिंटिंग कल्चर बढ़ता गया, हमने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को एक्वायर किया। नॉलेज एक्वायर करने के बाद हमने उसको एप्लीकेबल किया, सोसाइटी में फैलाया और उसको प्रिजर्व करके भी रखा। और रीजन हमें क्या बता रहा है? रीजन हमें बता रहा है कि प्रिंटिंग enabled intellectuals to produce, comment on, and evaluate the text, which spread an idea across the ideas across the Europe। तो हम देख रहे हैं कि प्रिंटिंग कल्चर की वजह से जो भी प्रिंट हुआ मटेरियल है, जो भी प्रिंट किया गया नॉलेज है, उसको जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, ओके, जो स्कॉलर लोग थे, उन्होंने क्या किया? उसको इवैल्यूएट किया, उसके ऊपर कमेंट भी किए, और इस तरीके से नॉलेज क्या हुआ? स्प्रेड हुआ अक्रॉस द यूरोप। It means both the things, both the statements, they are complementing one another. And that's why we can select option A। Okay, so हम option A select कर सकते हैं। वहां पर हम बोल रहे हैं the assertion and the reason both are true and R is the correct explanation of A। Okay, so this is true about question number 15। Okay, so we have to select option A। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट। इन द क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इज गिवन टू यू। ओके, आपको कॉलम ए लिस्ट ए दी गई है और लिस्ट बी दी गई है। लिस्ट ए में टाइप्स दिए गए और लिस्ट टू में आपको मेथड्स दिया गया है। ओके, यहाँ पर आपको बोला गया है टेरेस फार्मिंग के बारे में, स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में, कॉन्ट्रोर प्लोइंग के बारे में, और क्रॉप रोटेशन के बारे में। ओके, और जब हम ये, और वहां पर लिस्ट बी में आपको दिया है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन पैरेलली। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है हिल स्लोप्स आर यूज्ड एज कल्टीवेबल लैंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट कट रीजन्स। ऑप्शन सी, जब थ्री देखते हैं आप, अलोंग द स्लोप ऑफ माउंटेन। फिर चौथा ऑप्शन आप जब देखते हैं तो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन सिस्टमैटिक सक्सेशन। और जब हम चारों अपने ऑप्शन को देते हैं ए बी सी डी, तो हमें रियलाइज होता है कि ऑप्शन डी बहुत मैच करता है। क्यों? तो ऑप्शन ए के साथ, ओके, ऑप्शन ए के साथ बी है। ऑप्शन ए में बोला गया है टेरेस फार्मिंग। आप टेरेस फार्मिंग हमेशा देखोगे, इट इज ऑलवेज डन ऑन द हिल स्लोप्स, आर यूज एज अ कल्टीवेबल लैंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट कट रीजन। ओके, जो टेरेस का पोर्शन होता है दैट इज कंसिडर एज अ फ्लैट कट रीजन। ओके, और वहां पर हम कल्टीवेशन करते हैं, समथिंग वी ग्रो देयर। व्हेन वी टॉक अबाउट द बी, दैट इज अ स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके, स्ट्रिप क्रॉपिंग के साथ जो बहुत ही मैच कर रहा है वो होता है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन पैरेलली। ओके, पैरेलली आप देखोगे एक
मतलब दो तीन प्रकार के क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं इसमें, स्ट्रिप्स में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग। थर्ड ऑप्शन देखिए, जब ऑप्शन सी देखते हैं तो ऑप्शन सी जो कि कॉन्टोर फ्लोइंग है, और वहां पर हम देख रहे हैं ऑप्शन सी के साथ तीसरा ही मैच करता चला जा रहा है। तो तीसरा क्या है? along द स्लोप ऑफ माउंटेन। तो केंटोर पे फ्लोइंग होती है तो स्लोप्स आता है, स्लोप ऑफ द माउंटेन। ठीक, तो माउंटेन के केंटोर पे फ्लोइंग होती है, दैट इज वन ऑफ द रीजन इट मैच विद द ऑप्शन 3। और डी ऑप्शन के लिए जो कि है क्रॉप रोटेशन, और क्रॉप रोटेशन का करेक्ट आंसर है 4, that is different crops grown in systematic succession। ओके, आप क्रॉप रोटेशन का मतलब ही होता है कि एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप, सो यू ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स grown in a systematic succession, in a systematic way। Okay, I think you got the answer of 16, or you have understood what exactly we were asking, or what was asking under the question 16। ओके, तो चलो मुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Choose the right option. Okay, we have selected question 17. Choose the right option to fill in the blanks. Okay, and the fill in the blanks is the emergence of dash is directly connected to the rise of political party. Okay, the emergence of dash is directly connected to the rise of political party। देखो, जब पॉलिटिकल पार्टी जब भी आएगा तो इसका मतलब है political parties are existing because of the people, and people, it is there in the representative democracy। Okay, it is always there in the representative democracies। So wherever the representative democracy will be there, it means people's power is there, because of the people's representation। Okay, this democracy is existing। So political parties, the emergence of representative democracy is directly connected to the political party। Political parties are existing because of representation democracy or representative democracies। This is the option C is the correct answer। Okay, because political party ये फेवर करती है, लोगों को अप्रोच करती है कि मुझे वोट करिए। ओके, और इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम कनेक्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखने की कोशिश करते हैं। Which of the following is not a factor that has led to globalization? Okay, अब हमको ये चार ऑप्शन दिए जिसमें से हमको दिखना है is not a factor that has led to a globalization, जिसने ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट करने में मदद की है। ओके, तो 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो हम देखते हैं जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो पॉलिसीज की बात करते हैं कि डिफरेंट बिटवीन कंट्रीज different policies are being signed। When we talk about international trade agreements, whenever the globalization comes, तो ग्लोबलाइजेशन के साथ ये तीनों भी चीज जुड़ी है। कौन सी? ऑप्शन ए भी जुड़ा है, ऑप्शन बी भी जुड़ा है, और ऑप्शन डी भी जुड़ा है। लेकिन ऑप्शन सी जो है दैट इज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये नहीं जुड़ा है ग्लोबलाइजेशन के बाद। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है आपके देश में। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ओके, इंस्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, तो इनस्टेबिलिटी रहेंगी तो श्योरली यू कैन नॉट डू द एग्रीमेंट्स विद द डिफरेंट कंट्रीज, एंड श्योरली दैट विल अफेक्ट योर इकोनॉमी, कंट्रीज इकोनॉमी, इट मीन्स। ओके, तो ऑप्शन जो सी है वो बहुत ही करेक्ट आंसर है क्योंकि वो नॉट फेवर करता है टू द ग्लोबलाइजेशन। चलो मुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Which among the following is not a component of a political party? आपके पास 3 कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज के। ओके, और ये पूछ रहा है कि नहीं है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपको दिए 4 ऑप्शन उनमें से नहीं है। ओके, नहीं को बताना हमें। तो देखो, लीडर है, द एक्टिव मेंबर्स है, द फॉलोअर्स है। ओके, तो कौन नहीं है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है इन चारों में से? तो जो कंपोनेंट नहीं है वो है वोटर्स। ओके, क्योंकि लीडर्स भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स तो उससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और द फॉलोअर्स वी ऑल नीड
for the political parties. The voters, they required for the representative democracies. Okay. So that out of these four options, they are also important, but out of these four options, the voter is not the component of the political party. That's why we have selected option C. Okay. अब ऑब्जर्व करना है इस इमेज को बहुत ही केयरफुली. ओके. Give cartoon. This is a cartoon created by Neelam Banerjee, the renowned Indian cartoonist, illustrate and comic artist. तो आपको बहुत ही माइन्यूटली इस कार्टून को ऑब्जर्व करना है. इस कार्टून में क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की, क्या बोलने की कोशिश की है, और ये कार्टून को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन विच इज गिवन टू यू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ना क्यों ऑप्शन ए ही हमने सेलेक्ट किया? द सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया. ओके. तो आप देखो कि डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया, women's are given like more labor work. Okay, that is a disparity which is existing in India, and that has been depicted through this cartoon. Okay. So that is the correct answer, option A. Sexual division of labor in India, where the women they have to work a lot and men get a lot of rest. Okay. If you see this picture, you can see this image also, and you can see this image. You will come to know what is the disparity is existing in India, where especially with regards to this image. तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन 20 यानी एमसीक्यू को कंप्लीट किया है. तो चलो मुड़ते हैं सेक्शन बी की तरफ. ओके. सो इन द सेक्शन बी द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. इस क्वेश्चन नंबर 21 में द इमेज इज गिवन टू यू. स्टडी द मैप थॉरली एंड मेंशन द लैंग्वेज ग्रुप that is dominantly present in the श्रीलंका. ओके. ये आपको श्रीलंका का मैप दिया हुआ है और आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि वो कौन से ग्रुप से, लैंग्वेज ग्रुप दैट इज देयर इन द श्रीलंका. और सेकेंड जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना है और लैंग्वेज ग्रुप को बताना है. सेकेंड में उन्होंने पूछा है, ये सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका. ओके. तो आपको ये एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका बतानी है. तो द लैंग्वेज ग्रुप दैट इज, और इसका आंसर क्या है? द लैंग्वेज ग्रुप दैट इज डोमिनेंटली प्रेजेंट इन द श्रीलंका इज द सिन्हाला. आप सबको पता है सिन्हाला कम्युनिटी सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर पूरे श्रीलंका में एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. द एथनिक कंपोजिशन व्हेन वी टॉक अबाउट द श्रीलंका, जहां हम ऑब्जर्व करते हैं जो सिन्हाला स्पीकर्स है, ओके, दे आर 74 इन रेशियो. 74% है. तमिल जो स्पीकर्स है दे आर 18% इन रेशियो. And when we talk about the Tamils, okay, Tamil, when we are talking about the Tamil and dividing the Tamil into two subgroups, okay, that is Sri Lankan Tamils, तो तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि 13% दे आर एग्जिस्टिंग. कौन से? श्रीलंकन तमिल्स. और इंडियन तमिल्स जो है वो है 5% है. ओके. तो तमिल टोटल 18% है, उसमें से 13% श्रीलंकन तमिल से और 5% जो है वो इंडियन तमिल से जो माइग्रेट होके वहां पर गए हैं एज ए लेबरर और वहीं जाके सेटल्ड हो गए हैं ड्यूरिंग द कॉलोनियल रेजीम. तो ये हमें दिखाई देता है एथनिक कंपोजिशन. और जो सबसे बड़ा ग्रुप है लैंग्वेज ग्रुप वो है सिन्हाला ग्रुप दैट इज एग्जिस्टिंग देयर इन श्रीलंका. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. जब हम 22 को क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको रियलाइज होता है व्हाट इज आस्क्ड देयर. ओके. व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका इन द 19th सेंचुरी. क्यों यूरोपियन लोग अमेरिका की तरफ गए इन द 19th सेंचुरी? एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. ओके. एंड इट इज आस्क्ड फॉर 2 marks. दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. The answer is why European people flee to America in the 19th century.
The first reason which is mentioned there in the answer, that until the 19th century, the power and the hunger was common all over the Europe. Okay, तो all over the Europe power और hunger की लड़ाई चलती रह रही थी कब तक? 19th century तक. सेकेंड ऑप्शन जब हम ऑब्जर्व करते तो cities were crowded with the deadly diseases were widespread. तो ऑल ओवर यूरोप हम लोग देखते हैं कि क्राउड भी डेवलप हो रहा था, मतलब क्राउड बढ़ता जा रहा था और डेडली डिजीजेस स्प्रेड हो रही थी हर जगह. और इसीलिए यूरोपियन लोगों ने सोचा कि वो फ्ली होते हैं टू अमेरिका. ओके, क्योंकि उनको लगा अमेरिका इज द बेस्ट प्लेस वेयर दे कैन सेव देयर लाइफ. The third reason why European flee to America, that the religious conflicts were very common and the religious dissenters were persecuted. तो जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो गया था पूरे यूरोप में, जिसकी वजह से कई रिलीजियस डिसेंटर्स को परसिक्यूट किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था. So that is the third reason why people of Europe flee to America in the 19th century. तो अगर आपको पूछा कि why the Europeans flee to America, there are three reasons are there. कि in the 19th century हर जगह power और hunger was very very common. Everybody wants to be there in the power and hunger was there. People were not getting the food. Okay, this is the first reason. Why they and the cities were crowded with the deadly diseases. Okay, a lot of diseases were spread during that time, and this is one of the reason why people flee to America. And third reason, there was a religious conflict was existing all over the Europe, and many were persecuted. Okay, so I hope ये आपको second 22nd जो है 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो समझा. क्वेश्चन नंबर 22 जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें जो सेकंड और क्वेश्चन, ओके, दो क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 22 में. तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है traders traders and travelers introduce new crops to the land they travel. Okay, substantiate this statement with the illustration. बोलने का मतलब ये है कि ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जब एक से दूसरी कंट्रीज में जा रहे थे तो उन्होंने कई नए क्रॉप्स को, ओके, दे इंट्रोड्यूस मेनी न्यू क्रॉप्स टू द वेरियस लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, so this statement you have to illustrate and you have to examine properly and you have to tell us that which crops were introduced to which part of the world. Okay, so that we are expecting कि कौन से ट्रेडर्स ने और ट्रैवलर्स जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो कौन से क्रॉप्स को वो लेके गए, किस देश में, ओके, किस प्रांत में, किस देश में. तो जब हम आंसर को ऑब्जर्व करते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट हमको क्या बताता है कि traders and travelers introduce new crops to the land they traveled, that is spaghetti and noodles were the ready foodstuff they spread in distinct part of the world. It is believed that the noodles travel from the China to become a spaghetti. ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि जब अलग अलग जब वो घूम रहे थे वर्ल्ड में तो इन्होंने अलग अलग चीजें क्रॉप्स को लेके गए. उनमें से एक का नाम यहाँ हमने बताया स्पेगेटी और नूडल्स को. ओके, स्पेगेटी जो बहुत ही रेडी टू कुक फूड है जिसको हमने देखा वर्ल्ड वाइडली खाया जाता है, या हम बिलीव करते हैं कि ये जो था ये एक्चुअली नूडल्स था जो ट्रैवल्ड हुआ वेस्ट की तरफ, मतलब यूरोप की तरफ ये ट्रैवल्ड हुआ और ये फर्स्ट एक्चुअली फ्रॉम द चाइना. सो द नूडल्स वर फर्स्ट यूज बाय द चाइनीज पीपल एंड देन इट बिकेम स्पेगेटी with मतलब it was called with the term spaghetti in the western part or in the west or in the Europe. तो नूडल्स जो हो गया वो चाइना से मतलब था, चाइना का था और वो जाके वेस्ट में स्पेगेटी के नाम से मशहूर हुआ. ठीक है, हमने ये पढ़ा. दूसरा जो फूड है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. द फूड दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्टेपल डाइट टुडे लाइक द potatoes, okay, potatoes, soya ground nuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, etc., were known to our ancestors
until the accidental discovery of America by Christopher Columbus. ओके, तो ये अगर नहीं होता, अगर ये क्रिस्टोफर कोलंबस अगर अमेरिका को डिस्कवर नहीं करता एक्सीडेंटली, क्योंकि ये जितने भी फूड आइटम्स की मैंने बात की है, जितने भी स्टेपल डाइट की बात की है, जैसे कि पटाटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटोज, चिली, स्वीट potatoes, etc., were known to our ancestor until the accidental discovery of America by Christopher Columbus. तो इसकी वजह से आज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये खाया जाता है। अगर ये क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं करता तो हमें ये क्या फूड से कभी पता नहीं चलता। Okay, so I hope question number 22 is very, very clear to you. Okay, let's move to the question number 23. अगर हम 23 को देखते हैं तो लखा सिंह, ओके, 23 क्वेश्चन नंबर हमको क्या पूछ रहा है? लखा सिंह cultivates rice in Punjab as a commercial crop. Commercial crops वो crops होते हैं जो हमको profit देते हैं। How does he ensure higher productivity of the crop? Okay, how does he ensure higher productivity of the crop? कैसे उसे पता चलेगा ये higher productivity of the crop है? लखा सिंह जो है कल्टीवेट क्या कर रहा है? राइस इन पंजाब एज अ कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप जब आपके पास ज्यादा होगा देन ओनली यू कैन सेल, ओके, यू विल सेल इन द मार्केट। तो इसका आंसर जब हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स। ओके, अगर आपको कमर्शियलाइजेशन करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका क्रॉप आप मार्केट में सेल करें और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ओके, तो यहाँ पंजाब के हम रिपीटेडली पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ रहे हैं कि HYV सीड का इस्तेमाल भरपूर होता है। ओके, so this type of farming is the uses of higher doses of modern inputs, that is a high yield variety HYV seeds। केमिकल फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, HYV सीड्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड्स आप इस्तेमाल करोगे, पेस्टिसाइड्स आप इस्तेमाल करोगे, और इरिगेशन फैसिलिटी व्हेन यू विल प्रोवाइड टू योर फील्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी, he must be using all these to ensure the higher productivity, नहीं तो it is next to impossible। तो अगर लखा सिंह चाहता है कि उसके क्रॉप्स, उसका जो राइस है उसको वो कमर्शलाइज करे, उसको बेचे और अर्न करे प्रॉफिट, तो उसे ये सारी चीजें यूज करनी ही पड़ेगी। कौन सी चीज? क्योंकि वो पंजाब से बिलोंग कर रहा है, तो वो कहाँ पे क्या करेगा? HYV सीड्स यूज करेगा, वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेगा, वो इंसेक्टिसाइड यूज करेगा, वो पेस्टिसाइड यूज करेगा, वो इरिगेशन फैसिलिटीज देगा अपने फील्ड को, और उसी के बाद उसको हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन होंगी, मिलेगी। एंड ही मस्ट बी यूजिंग ऑल दीज फैक्टर टू एंश्योर और टू इंक्रीज हिज प्रोडक्टिविटी। ओके, दिस इज वेरी ट्रू। चलो मुड़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इन द क्वेश्चन नंबर 24 इट इज क्लियरली आस्क्ड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द जुडिशरी। आपको जुडिशरी का रोल, ओके, जुडिशरी का रोल आपको बताना है। रोल ऑफ जुडिशरी इन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। Now, what is the role of judiciary? The judiciary is an important independent organ. Continuously हम लोग observe कर रहे हैं, all the three organs of the government, they are independent. Okay, they are, and judiciary is one of the most important organ which is totally independent organ of the state in India. Okay, it has its important role. It has its important role इन द एग्जिस्टिंग इंडियन फेडरल गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जुडिशरी सिस्टम हमारे फेडरल सिस्टम में, इंडियन फेडरल सिस्टम में। पहला क्यू, क्या करता है वो जुडिशरी? द जुडिशरी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द प्रोसीजर्स। सो वॉट एवर द थिंग दैट इज मेंशन देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ओके, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उस चीजों का, उस प्रोसीजर्स का, उस प्रोविजंस का फॉलो किया जा रहा कि नहीं, ये जुडिशरी ऑब्जर्व करता है। ये ऑब्जर्व करता है, बहुत ही फोकसली ऑब्जर्व करता है। सेकेंड रीजन, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज, डिस्प्यूट अराइज अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, the High Court
and the Supreme Court may pass the necessary order and give direction. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होता है स्पेशली डिवीजन ऑफ पावर को लेके कि पावर का डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा है स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा है तो जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देते हैं दे पास द नेसेसरी ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्शंस टू द पीपल दोज हु हैव अ डिस्प्यूट्स फॉर द पावर ओके तो वो जिनको भी पावर के लिए डिस्प्यूट्स होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं तो ऐसे समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करते हैं उनको कि ये आपका पावर है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो तो दे प्रोवाइड द ऑर्डर टू द पीपल दोज हु हैव द डिस्प्यूट स्पेशली विद रिगार्ड्स टू पावर्स जब हम थर्ड पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं इन इंडिया वी हैव अ यूनिफाइड जुडिशरी with the Supreme Court at apex. And you know, when we compare all the three courts, we always have seen that the Supreme Court is the most powerful, it's the apex court. And the Supreme Court of India has the original jurisdiction to settle disputes between the union and the state. So, whenever there will be a dispute between the central government and the state government, the Supreme Court will take the final decision and it is they will guide them. Okay, that's the how the Supreme Court will settle down the disputes between the central and the state government. So all the 3 points are very, very important. That shows how much it is important judiciary system in our country, judiciary system oversees whether the people are following, whether the government is following the law, the procedure, and everything. सेकेंड में हमने पढ़ा कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर इट विल बी गाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट and the third thing, if the conflict will arise between the central government and between the state government, so surely the apex court, which we call as the Supreme Court, will take care and will settle down the dispute. तो चलते सेक्शन सी की तरफ जब हम सेक्शन सी को ऑब्जर्व करते हैं और स्पेशली सेक्शन सी के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 अब 25 एक स्टेटमेंट दी गई है आपको ओके सो द स्टेटमेंट इज प्रिंट कल्चर क्रिएट्स द कंडीशन विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर अब जब भी हम प्रिंट कल्चर की बात करते हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इससे कोई संबंध है इज देयर एनी को रिलेशन इज देयर एनी कंडीशन बिकॉज ऑफ द प्रिंट कल्चर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन okay occurred is it so support the statement. So you have to agree with the statement with the suitable arguments. Okay, you have to give the valid points that will tell you yes कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तो जब हम ये इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते तो प्रिंट पॉपुलराइज द फर्स्ट पॉइंट द प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स दिस attacked the authority of the church and the despotic power of the state अब यहाँ हम डिस्पोटिक पावर किसके लिए बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं मोनार्क के लिए राजा के लिए ओके तो प्रिंट कल्चर आपने इसके पहले भी पढ़ा है वोल्टियर्स को रॉस्यू ओके दे प्लेड अ वेरी वाइटल रोल तो ऑल दीज थिंकर्स दे प्लेड अ वेरी वाइटल रोल एंड दे व्हेन व्हाटएवर द books they wrote okay they say two treaties of government or the Montesquieu wrote about the or the social contact when we talk about the Rousseau तो ये सारे लोगों ने कोई ना कोई बुक लिखी है और उस बुक की वजह से उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया चर्च के बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम वेन एवर वी टॉक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन चर्च was the topmost or the clergy were at the topmost position okay more important than the ruler also तो उन्होंने या तो चर्च की अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं या दे टॉक अबाउट द डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट या द डिस्पोटिक पावर दे आर टॉकिंग अबाउट द मोनार्क okay because they consider because the monarch was not taking any kind of a step to to make the life of the common people better that's why they call it him as a despotic ruler
The second point tells you because the printing culture plays a very important और ये जो आइडिया जो थिंकर्स ने जो लिखे थे वो थिंकर्स की आइडिया यूरोप पूरे यूरोप में स्प्रेड हुए। तो ये पूरे थिंकर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई किताब लिखी है और वो किताब प्रिंट के जरिए से वो छापी गई एंड दैट played a very important role because of this the enlightenment was spread all over the Europe. The second important thing when we are talking about new ideas of the social revolution came into being, public had become aware of the power of reason and tried to question idea and belief. तो जब लोगों ने इसको पढ़ा, द थिंकर्स जो जिन्होंने लिखा था, ग्रेट थिंकर्स ने जो भी लिखा था, when people started reading all these thinkers' view, so the most important thing they were thinking about the reason and they were asking the questions and the ideas and the beliefs. This is very important. When we read something, we start thinking over it. And we start thinking over it, we ask questions. तो लोगों ने सोचना शुरू किया, लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, उनके बिलीव्स को उन्होंने समझने की कोशिश की। तो ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रेवोल्यूशन केम इनटू बीइंग। वो कैसे आया सोशल आइडिया न्यू रेवोल्यूशन क्या सोसाइटी में क्यों न्यू रेवोल्यूशन व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म सोशल रेवोल्यूशन बिकॉज थ्रू आउट द सोसाइटी न्यू काइंड ऑफ आइडिया was emerging there that time because of the print culture. Okay, और नए लोग अभी पढ़ने लगे उनका क्वेश्चन करने लगे नाउ दे वर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स and they were starting believing in it also. Third point, by the year 1718, there was an outpouring of the literature that mocked the royalty and criticized their morality. Cartoons and caricatures typically suggested that the monarchy remained absolutely in pleasure while the common people suffered immense hardship. यहाँ पर हमको थर्ड पॉइंट में पता चलता है कि 1790s में देयर वाज अ आउटपोरिंग ऑफ द लिटरेचर बहुत सारी किताबें लिखी गई और ये किताबें जो लिखी गई लिटरेचर जब आया बाहर प्रिंट कल्चर के थ्रू तो बहुत सारी किताबें मुक कर रही थी मतलब हंसी उड़ा रही थी किसके ऊपर रॉयल्टी के ऊपर मतलब जो राजा लोग थे उनके ऊपर ओके दैट एंड दे वर क्रिटिसाइजिंग ऑल्सो ऑन द मोरालिटी क्योंकि राजा कुछ नहीं कर रहा था ओके सो कैरिकेचर छप रहे थे छोटे छोटे कैरिकेचर मतलब छोटे छोटे इमेजेस छप रहे थे वो किताब के अंदर या कुछ डिपिक्शंस हो रहा था कार्टून्स जैसे या कुछ लिखा जा रहा था उनके बारे में तो ये कैरिकेचर या कार्टून्स या फिर कुछ लिखना ये प्रिंट में ही लिखा जा रहा था किताबों में तो ये जब लिखाया जा रहा था तो ये लिखा जा रहा था किसको मूव करने के लिए रॉयल्टी को या फिर उनको क्रिटिसाइज करने को क्योंकि ये मोरालिटी भूल चुके थे लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे okay all these people they lost the morality that they have the responsibility to take care of the people and the cartoons and the caricature which was imprinted in that those books typically suggested that the monarchy remained absolutely in pleasure while the common people they suffered very hard life तो ये कंटिन्यूसली उस बुक्स के थ्रू पता चल रहा था कि मोनार्की पावर मस्त है एक प्लेजर भरी लग्जरियस लाइफ जी रही है और जो कॉमन पीपल है वो बहुत 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 ज्यादा हार्डशिप कर रहा है बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना कर रहा है एंड द मोनार्की और द मोनार्क पावर दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द कॉमन पीपल दे दे आर अनअवेयर अबाउट द हार्डशिप ऑफ द कॉमन पीपल तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको ये तीनों पॉइंट समझा है ओके यहाँ हमने क्वेश्चन था कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को कैसे हेल्प किया तो अगर ये थिंकर्स लिखते नहीं तो कुछ भी रेवोल्यूशन होता नहीं तो पहले सोशल रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद लोगों ने इतना ज्यादा लिटरेचर लिखा कि वहां पर ऑटोमेटिकली लोगों को एनकरेजमेंट मिला और उसकी वजह से प्रिंट कल्चर एक बहुत बड़ा पिलर रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और ये क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कह रहा है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर दैट इज टर्शरी सेक्टर इन द इंडिया सो इंडिया में टर्शरी सेक्टर इतना ग्रो क्यों हो रहा है दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर ये ग्रो हो रहा है
तो क्यों हो रहा है? तो इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमको एक एक करके बताना है। तो पॉइंट वन क्या कह रहा है? इन द डेवलपिंग कंट्रीज द गवर्नमेंट हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ द बेसिक सर्विस, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, education educational institution post and telegram services, police station, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, bank, insurance companies, etc. अब देखो टर्शरी सेक्टर ये एक्चुअली सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस सेक्टर क्यों है? क्योंकि इंडिया का ऐसा बैकग्राउंड ही ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में हम ऑब्जर्व करते हैं कि गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव ऑल दीज फैसिलिटीज टू द कॉमन पीपल। कौन सी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देता है हमको? जिसको हम बेसिक फैसिलिटीज भी बोलते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल हमें प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम ऑफिस है हमारे पास, पुलिस स्टेशन से, दैट इज फॉर द कॉमन पीपल, कोर्ट इज अवेलेबल, दैट इज फॉर द कॉमन पीपल, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज है ना, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसेज है जहां पर लोगों के लिए सुविधा दी जाती है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। डिफेंस सिस्टम है, दैट इज अगेन फॉर द कॉमन पीपल। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज देयर, बस फैसिलिटीज एंड railway facilities. Banks are available for the common people. Insurance companies are existing for the common people. तो ये सब सर्विस दे रहे हैं सभी चीज, और गवर्नमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो हमको बेसिक सर्विस दे रहा है, और ये सारी गवर्नमेंट की बेसिक सर्विसेज है, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज बेसिक फैसिलिटीज विच इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अस थ्रू दीज ऑफिसेस। ओके, the second reason is the development of agriculture and industry leads to the development of the service such as trade, transport, storage, etc. तो टर्शरी सेक्टर के बढ़ने का दूसरा कारण हम देख रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर का डेवलपमेंट होना और इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होना। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होना मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना एक्चुअली इंप्लाई कर रहा है कि ट्रेड बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, स्टोरेज होगा। ओके, तो कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नथिंग बट द टर्शरी सेक्टर। ओके, कल्टीवेट कर लिया, उसको स्टोर करके रखना। अगेन प्राइमरी सेक्टर is actually providing some kind of service, that is again storage is the tertiary sector. So greater the development of the primary and the secondary sector, more would be the demand for such services. Okay, तो जैसे सब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, टर्शरी सेक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। Okay. The third thing which we are talking about, or the third point that implies to us, as income level rise, जब ये तीनों सेक्टर बढ़ेंगे तो जैसे इनकम लेवल राइज, certain sector of the people start demanding many more services such as eating out, tourism जो हम आज ऑब्जर्व कर रहे हैं, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. Okay, and this change was quite sharp in the cities and especially in big cities like Mumbai, Delhi, and now we are observing in Nagpur also. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रही है लोगों की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ रही है। और इनकम बढ़ रही है तो फिर और एडिशनल सर्विसेज डेवलप हो रही है, जैसे कि हम अब बाहर जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, टूरिज्म, बाहर घूमने जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेते हैं। All these actually shapes widely in the big cities. The fourth point it talks about over the past decades, so certain new services such as those based on information and communication technology has also become important and essential. तो आज के जमाने में तो information and communication system is very very important, and technology is one of the major part of our life. Okay, so that also provide the services to us. Okay, so all these technological aspect is equally important because they are providing service to us, and ultimately that is enhancing our life.
Okay, so I think this is very clear to you why the tertiary sector is expanding day by day in our country and what is a reason for the growth of the tertiary sector that we have discussed. Okay, why the tertiary sector is advancing day by day. And one of the last point is that a large number of the workers are engaged in the service sector. बहुत सारे लोग engage हैं ये service sector के अंदर, such as the small shopkeepers. Okay, these are the small shopkeepers and the repair persons, transport person. Lot of people they are involved. End of the day, what we want to say here, lot of workers are or a lot of people they are engaged in this sector, and that's why we are continuously observing this tertiary sector is growing day by day, which is also called as a service sector. अब जब हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं बेटा, तो वहां पर एक और ऑप्शन है, मतलब और में क्वेश्चन है। ओके, और ये और का क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये और का जो बी क्वेश्चन है वो हमको पूछ रहा है, विच सेक्टर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज इज प्रिफरेबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विच सेक्टर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज इज प्रिफरेबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। इन्हें जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, इज प्रिफरेबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करके ज्यादा देता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर देखता है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखता है, विच इज प्रिफरिंग दैट मोर एम्प्लॉयमेंट शुड कम, ओके, और मोर एम्प्लॉयमेंट इमर्ज बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपको देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर इज प्रिफरेबल ओवर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में बात करते हैं, organized sector is a very organized in the government employees come under the organized sector. Okay, so the organized sector is preferred over the unorganized sector. हम देखते हैं जब भी अनऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, तो हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हम प्रिफर करते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करें। क्यों करते हैं, हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है? देयर आर रीजंस आर देयर, इट प्रोवाइड्स मोर बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। तो जो लोग भी काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, दे हैव मोर बेनिफिट्स फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, and that is one of the reason why we prefer to go in the organized sector. Second reason why we want to go to the organized sector or the organized sector, we think that the employment should be given in the organized sector. In the organized sector, employees have a job security and regular income. Okay. In the unorganized sector, there is a no job security. Okay. And irregular income may be possible. So here we are continuously getting the job security and regular flow of the income. This is second reason why we prefer that we should get the employment in the organized sector. Third reason when we are talking about, they also receive benefits such as paid leave, provident fund. Okay, we get the paid leaves. We also get the provident fund, and we also get the gratuities. These are the three basic reasons. Okay, that's why we prefer that we should get the employment in the organized sector rather than in unorganized sector, because in organized sector there is the employees get more benefit, employee gets job security, employees get regular income, employees get many benefits such as paid leaves, provident funds मिलते हैं और gratuity मिलती है जो आपकी सर्विस कंप्लीट होने के बाद। so that's why we prefer that we should get the job employment in the organized sector. When we are talking about question number 27, children, so in the 27th question, it is asked that agriculture give boost to the industrial sector. यानी agriculture sector की वजह से industrial sector भी develop हुआ है. Now this statement is given to us. We have to justify the statement with any three relevant points. Okay? तो हमको 3 points लिखना है और इस 3 points में हमें ये बताना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो जब हम पहला पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ इट इज बूस्टिंग, हाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज बूस्टिंग, एनकरेजिंग टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द फर्स्ट पॉइंट इट इज agriculture provides raw material to the industry. You cannot imagine that the
industry is running without the raw material. Okay, so all the raw material, most of the raw material is been provided through the agricultural sector. That is one of the reason that the agriculture sector is promoting the industrial sector. The second point, agricultural sector provides market for the industrial products. Okay, the agriculture provides market for the industrial products. तो अगर एग्रीकल्चर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडस्ट्रीज में और इसीलिए प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसलिए मार्केट बनाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मार्केट इसलिए बनाए क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और ये रॉ मटेरियल की वजह से वो अपना फिनिश गुड प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये फिनिश गुड को वो मार्केट में बेच रहे हैं, तो उनका मार्केट इसलिए प्रिपेयर हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का मार्केट इसलिए बन रहा है क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर है। थर्ड पॉइंट जब हम ऑब्जर्व करते हैं, द एग्रीकल्चर हेल्प बूस्ट न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही नई नई इंडस्ट्री डेवलप्स हुई है। तो जो भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं, जो भी चीज एग्रीकल्चर में काम आती है, तो उनकी इंडस्ट्रीज भी बनना शुरू हो जाती है, उन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज बनती है। ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर अगर डेवलप होता है तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री भी डेवलप होती है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज हेल्पिंग द एग्रीकल्चर, and because of this new industries are emerging in our country and all over the world. The fourth reason why we are observing and why we are continuously saying with confirmation that agriculture boosts the industrial sector, the fourth reason is that the industries such as cotton, jute, silk, woolen, textile, okay, cotton, jute, silk, here the comma, jute, silk, woolen, textile, sugar, and edible oil, etc., are based on agricultural raw material. So we'll observe cotton, jute, silk, woolen, textile, sugars, all these are cultivated. So most of the products, they are the edible and cultivated on the agricultural field, and these are the raw material, are based on the agricultural raw material. Okay, so these industries, they are developing. Cotton industry is developing, jute industry is developing, and silk industry is developing, woolen industry is developing, all these textile industry is developing, sugar industry is developing, and all these are agricultural products. Okay, these are the agricultural products, goods that is being used for the different industries. So these are the four reasons that we are observing that because of this agricultural sector as it is developing, the industrial sector is also being promoted. It is boosting to the industrial sector. So agriculture is complementing the industrial sector. They both are going hand to hand. So that we have to see or we had observed under this question. The next question which is there, that is question number 28. Which provision of the Indian Constitution makes India a full-fledged federation? Now, whenever the federation term comes, it means we are talking about the country. Okay, here we are talking about our country, our India as a country. So when we observe which provision of the Indian Constitution makes India a full-fledged federation or the country, the first point is that the Indian Constitution that makes India a full-fledged federation that declares India as a union of the state. Now, union of the state का मतलब ये है कि इंडिया एक ऐसा स्टेट है जहां पर यूनियन ऑफ द स्टेट है, मतलब स्टेट के यूनियन से एक फेडरेशन बना, एक कंट्री बना, स्टेट के यूनियन से एक फेडरेशन बना है, मतलब एक कंट्री बना। सेकेंड पॉइंट जो हमको बता रही है, देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, एक प्रकार का नहीं है, यूनिलैटरल नहीं है। ओके, यहाँ आप देखोगे कई टायर्स है, मतलब टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर एग्जिस्टिंग। सो इंडिया हैज द थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, and we all know that each level of the government has its own jurisdiction in matters of legislature, taxation, and administration, even though they govern the same citizen. Okay, तो अगर वो सेम ही सिटीजन को गवर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना जुरिस्डिक्शन है, अपना लेजिस्लेचर है, अपना टैक्सेशन का एरिया है और अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जबकि
पूरे देश का भी सेम है कि तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, सबके पास क्या है? अपना खुद का एक लेजिस्लेचर है। सबके पास अपना एक टैक्सेशन स्कीम है कि इस एरिया से वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। और सबके पास अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। और जब हम सभी लोगों को काउंट करेंगे तो वो कंट्री ही कहलाती है, मतलब दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजन। ओके। The fourth point that tells you that is power and the function of each tier of the government is specified and guaranteed by the constitution. This is very, very important. Power and the function of each tier, जो भी level of government है, सबका function और सबका power, ये बहुत ही specifically mention किया है in the constitution. Clearly mentioned what are the function and what are the powers of each level of government. Okay. And the fourth reason why we consider that India is a full-fledged federation, the Supreme Court has been given power to settle the disputes between the different levels of the government. तो कोई भी level of government के जब भी disputes होंगे तो उसको resolve कौन करेगा? उसको resolve करेगा Supreme Court. Supreme Court has a authority according to the Constitution of India that it will resolve the disputes between all the layers of the government. So that's the 5 point which is mentioned there under the question 26. Okay, why India is a federation, is a country because there is a union of the states. Okay, we have three levels of government, and each level of government has its own legislative system, area, taxation area, and the administrative area. Powers and the function of each government has been clearly mentioned in the constitution, and the Supreme Court has the authority to solve the disputes of three levels of the government. Okay. Turn to question number 29. Study the table given below and answer the question that follows. Okay, so here the sources of credit per rupees, that is 1,000 of the rural household in India in 2012. So the sources of credit, it is given to us, money lenders, they provide 33%, landlords 1%, institutional agencies, they provide 5%, commercial banks, they provide 25%, cooperative societies, banks, they provide 25%, governments, they provide 1%, and other non-institutional agencies, they provide 2%, and the relatives and the friends, they provide 8%. That is a percentage ratio is being given to us from which we credit the money. Okay. So this is a question, and this you have to clearly study this table, and then you have to following questions are being given and answer the questions that follows. Okay. So what are the questions that follows here? Which are the three major sources of credit from the rural household in India? Okay, कौन से तीन मेजर सोर्सेज है जहां से हमको क्रेडिट किया जाता है पैसा फ्रॉम द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया? ओके, और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो है मनी लेंडर्स आर द मोस्ट डिमांडिंग सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द रूरल हाउस होल्ड वन। तो आप हम हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्रेडिट जो है लोग हमेशा मनी लेंडर से पैसा लेना पसंद क्यों करते हैं, स्पेशली गांव में, रूरल एरियाज में? क्या रीजंस है? क्यों उनका इतना डोमिनेंस चलता है? क्यों इतना उनका शेयर इतना इतना इजीली अवेलेबल है? उनके पैसा लेना इतना आसान है उनसे लेने? क्यों गांव के लोग प्रिफर करते हैं कि इन्हीं लोगों से लिया? तो पहले देखिए विच आर द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि गांव में कौन सी जगह से हमको इजीली मिल जाता है, क्रेडिट किया जाता है पैसा। तो वो एक है मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स और रिलेटिव्स। गांव के लोग इन तीन लोगों से पैसा लेना ज्यादा आसान समझते हैं एज कंपेयर टू अदर। ओके, तो मनी लेंडर से बहुत आसानी से पैसे ले लेते हैं, लैंडलॉर्ड्स के पास भी पैसे मांग लेते हैं, और या तो फिर हम अपने रिलेटिव से अगर हम गांव में रहते तो मांग लेते हैं पैसे। दूसरा रीजन हम देख रहे हैं क्योंकि गांव के लोग जो है वो क्यों मनी लेंडर से ज्यादा इजीली पैसे लेते हैं? तो पुअर हाउस होल्ड स्टिल डिपेंड्स अपॉन द इनफॉर्मल, क्योंकि मनी लेंडर से पैसा लेना ये क्या है? इनफॉर्मल सोर्स है, okay, of credit, because a bank loan requires proper documentation and collateral, क्योंकि बैंक क्या आपसे मांगता है?
डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा या कोई ना कोई कोलैटरल आपसे मांगेगा, कुछ बदले में कुछ मांगेगा, तब आपको पैसे पैसे क्रेडिट करेगा, विच इज रेयरली अवेलेबल विद द पुअर हाउस होल्ड। जो गरीब होता है उसके पास नहीं होता है, इसलिए वो किसकी तरफ भागता है? इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की तरफ भागता है, जैसे कि मनी लैंडर्स, जैसे कि know the borrowers personally and are often willingly to give a loan without any collateral। तो ये लोग बिना किसी कोलेटरल के किसी भी बोरोवर को आसानी से रूरल एरिया में लोन अवेलेबल कराते हैं, पैसे क्रेडिट कराते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल दे प्रिफर टू गो टू द मनी लेंडर्स rather than going to the banks, because in the banks lot of documentation is there, lot of collateral is required, and they don't know, they do not have these things. So they prefer, the easiest method is go to the money lenders, take the credit from these money lenders because they know them, as both are living in the rural areas, and it is being easily credited by the money lenders to the poor। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि सेक्शन डी बताता है हमें। सेक्शन डी ये 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ये। तो चलो हम देखते हैं कि 30 क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद द इलस्ट्रेशन। ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, बहुत सारे तरीके जिसके थ्रू हम ये प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन जो होता है, लैंड का डिग्रेडेड होना, कम होना, ये हम बचा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे को पूछा गया जो बी क्वेश्चन है, एनालाइज द मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट सॉइल एरोशन। कौन से मेजर्स है जिसके थ्रू हम सॉइल एरोशन से बचा सकते हैं सॉइल एरोशन को। एनुमरेट द नेचुरल रिसोर्सेज विच लीड्स टू सॉइल एरोशन। ओके, आपको बताना है ऐसे कोई सोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज विच जो सॉइल एरोशन को लीड करते हैं। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो पहला जो तरीका है जिससे के थ्रू हम लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, वो है एफोरेस्टेशन। एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, planting of the shelter belt of the plants, control of overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check the land degradation in the arid region। तो आप देखोगे हमारे पास एफोरेस्टेशन सबसे अच्छा तरीका, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग एरिया, कोई भी एरिया में एनिमल को ग्रेज करने के लिए ना भेजे, खाने के लिए ना भेजे। ग्रेजिंग एरिया भी प्रॉपर होना चाहिए जहां पर ग्रेजिंग करने के लिए एनिमल्स को भेजा जाए। तो ये तरीके से हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। दूसरा है, हम शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं, तो शेल्टर बेल्ट से भी हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। ओवर कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग, ये भी हम एक तरीका है। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोनी बुशेस, तो जहां पर भी सैंड ड्यून्स है वहां पर वी कैन डू, वी कैन ग्रो द thorny bushes। These are some of the methods through which we can check the land degradation, especially in the arid region where the availability of the water is less। The second question का जो हमको बोला गया था कि what are the measures that we analyze the measures adopted to prevent the soil erosion। So proper management of the waste lands, control of mining activity, proper discharge of the, तो पहला बोला गया है proper management of waste land, तो हर लैंड को वेस्ट होने से बचाना है। Control of the mining activity, that is very very important, all the mining activity, whichever the activity we are conducting, that should be very proper discharge। ओके, कोई भी जगह कोई भी पानी को नहीं डालना है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को नहीं डालना है। डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स should be very appropriate। Okay, it should not be on the water bodies or it should not be on the land। Waste after treatment can reduce। Okay, that is again very important कि जो भी waste निकलता है उसको reduce करना है, उसको after treatment कितना कम minimize कर सकते हैं, that is very important। and the water degradation in the minerals and the suburban। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमें? There are various measures
which can be adopted to prevent the soil erosion. So यहाँ हमको preventive measures लेना है for the soil erosion. Okay? It means that we have to take the measures how we can be adopted to prevent the soil erosion. तो soil erosion को कैसे prevent कर सकते हैं? कौन से measures लेने चाहिए? That we will going to discuss under this answer. That is of 30B. The first thing which is mentioned here is that flowing along the contour line can be decelerated the flow of water down the slope. This is called as a contour flowing. So जब contour होते हैं, contour मतलब जो slopy area होता है, अगर वहां पर हम फ्लोइंग प्रोसेस करते हैं तो इससे एक चीज हमें बहुत फायदा होती है कि हम क्या कर सकते हैं सॉइल एरोजन को रोक सकते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड दैट वी कैन प्रिवेंट द सॉइल एरोजन थ्रू द कैंटो फ्लोइंग the second point, it tells you about steps can be cut out on the slopes, making terrace cultivation restricted erosion. Western and central Himalayas have well developed terrace farming. The terrace farming or the terrace cultivation is one of the best method that we can take to prevent the soil erosion. The third point, it tells you that large field can be divided into strips. हम ऐसे strips में divide कर सकते हैं, ठीक है? The large field can be divided into strips and strip of the grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind and this method is also known as strip cropping. तो स्ट्रिप क्रॉपिंग ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है टू प्रिवेंट द सॉइल एरोशन इस तरीके से हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं और स्ट्रिप ऑफ द ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स ओके बिटवीन द क्रॉप्स the fourth point, it tells you that planting lines of the trees to create shelter also works in a similar way. So if we are making a shelter, okay, if we are making the shelters, okay, so that also is one of the best way to prevent the soil erosion. Rows of such trees are called shelter belt. Okay, these are called as a shelter belt. If the trees are existing here, okay, in this way. So we will make the shelter belt here and this shelter belt will prevent the soil erosion. So these shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes in the western India, especially where the dunes are there, sand dunes are there. The last part it tells you, or the last point it tells you, natural forces like wind, glacier, and water lead to the soil erosion. So these are the agents. Wind is a one of the agent that actually forces for the soil erosion. Glaciers is one of the agent and the water is one of the agent. These are the three agents that invite soil erosion. So we have to take care that these natural agents should be prevented so that we can minimize the soil erosion. तो ये हमने 30B का क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है. Now let's move to the question number 31. Now in question number 31, two questions are there. Okay. The first question, that is the A question, it is asking you, do you agree that the period of 1848, okay, 1848 was considered as a phase of the revolution of the liberals in Europe? Okay, elucidate with the suitable examples. So first we'll try to understand what exactly the question is talking about. So here the question is asking us that in the year between the period of 1848, what was the action taken by the liberals to brought the revolution in the Europe? Okay, and we have to verify this with the examples. So let's try to understand what exactly the question 32A is
asking and what is the answer of it. So when we are talking about question number 32A, the answer is 1848. The first point it tells you that 1848 in many European countries, a revolution led by the educated middle class. तो जब भी हमारे सामने लिबरल्स की बात आएगी तो हम बात करेंगे एजुकेटेड मिडिल क्लास. वी हैव टू थिंक अबाउट that the liberals they were the educated middle classes, okay, was underway along with the revolt of the poor, unemployed peasants and the workers, okay. So these middle class educated middle classes people, which we call them as the liberals, actually they brought the revolution, they actually did the revolt of the poor, unemployed, for the peasants, and for the workers. And they are the real heroes, those who brought the revolution during the era of 1848. The second thing which these liberals they brought in France also. In France, in February 1848, emperor abdicated. Okay, that you have to remember कि फ्रांस में क्या हुआ था? In the month of February 1848 में कि यूरोप के मतलब जो फ्रांस के एम्परर थे उन्होंने एब्डिकेट किया था. एब्डिकेट करना मतलब अपनी रिजाइन करना, अपनी पोस्ट को खाली करना. From abdicated the throne and the republic based on the universal male suffrage was proclaimed. तो वहां पर एक नई गवर्नमेंट बनती है जो गवर्नमेंट रिपब्लिक होती है. लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनी है फ्रांस में इन द ईयर 1848 by the initiative taken by the liberals which we call as educated middle class, इन्होंने यूनिवर्सल मेल सैफ्रेज का इस्तेमाल किया और वहां पर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया. कहां पर किया? फ्रांस में किया. कब किया? फेब्रुवरी में किया इन द ईयर 1848. किसने किया? लिबरल्स. इन लिबरल्स को हम क्या बोलते हैं? educated middle classes people. Okay. The third point it tells you in other parts of the Europe such as Germany, Italy, Poland, and the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes demanded for the constitution. So these liberal people, these educated middle class people, they demanded for the constitution. Where they demanded? In Germany, in Italy, in Poland, in Austro-Hungarian Empire. They demanded for the constitution. At the same time, they also demand for the nation. Okay? They also demand for the nation. They took advantage of growing popular unrest to put their demand for the creation of the nation state. तो जो भी अनरेस्ट कंडीशन चल रही थी कहां पर? यूरोप में, जैसे कि जर्मनी में, जैसे कि इटली में, जैसे कि पोलैंड में. तो इन्होंने इन अनरेस्ट कंडीशंस को का सहारा लेके वहां पर डिमांड की एक नेशन स्टेट बनाने की. उन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने डिमांड की नेशन स्टेट बनाने की और उन्होंने एक और डिमांड की कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए उनको, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी मिलना चाहिए. इन्हें एक नेशन स्टेट बनने के बाद वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलना चाहिए. मतलब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते, अप्रिशिएट करते, वो भी आपके पास राइट होना चाहिए. और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब फ्रीडम ऑफ ग्रुप्स बनाने की वो भी इजाजत मिलनी चाहिए. ये हमने देखा कि लिबरल्स की इनिशिएटिव की वजह से हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे गरीब अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए उन्होंने रिवोल्ट किया. ओके, रिवोल्ट किया फ्रॉम द मोनार्की पावर, फ्रॉम द एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज और इस तरीके से उनको न्याय दिलाया. सेकेंड पार्ट में हमने देखा फेब्रवरी में 1848 में फ्रांस में जब एम्परर ने एब्डिकेट कर दिया तो वहां पर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ. तीसरे पार्ट में हमने देखा जो कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर में हमने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर मेन एंड वुमेन ऑफ द मिडिल लिबरल क्लासेस they demanded for the constitution, they demanded for the nation state,
They also demanded for the parliamentary principles. They demanded for the freedom of press. They demanded for the freedom of associations. तो लिबरल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशन स्टेट बनाने में, हमने फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्व किया. Now let's take the second question. Now what the second question is asking to us, that why was the Balkan region referred to as a powder cake of Europe prior to the World War One? अब ये बिल्कुल सच है कि बाल्कन जो रीजन है हमारे पास, वो पावर केक ऑफ यूरोप क्यों बोला जाता है, क्यों ऐसा समझा जाता है कि उस रीजन की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इमर्ज हुआ दुनिया में. तो लेट्स ट्राई टू आंसर, टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो जब हम बल्कन रीजन टॉपिक, तो लेट्स टेक द फोर्थ पॉइंट. ओके, हम क्वेश्चन नंबर जो बी था, हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का ए था, उसको ही हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते. तो उसका फोर्थ पॉइंट जब हम ऑब्जर्व करते, तो हम देखते कि इन द जर्मन स्पीकिंग एरियाज a large number of political association came together in the Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. तो यहाँ पर लिबरल्स की मदद से ऑल जनरल नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है. वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं. कहां पर? इन जर्मन स्पीकिंग एरियाज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन came together in the Frankfurt, okay, and they decided to vote for the all German National Assembly. The second point, the next matlab, question means point fifth, it tells you that on 18th of May 1848 को 831 elected representatives ने assembled, मतलब वोटिंग प्रोसेस हुआ और जिसमें 831 members were being elected, okay, for the Frankfurt Parliament. And this Frankfurt Parliament, they did not have the parliament that time. So what they had done, they converted the Saint Paul Church, matlab the church was converted, the Saint Paul Church was converted into a parliament. Okay, because to sit and to discuss uh, for all these representatives, they have to sit at one place. So that's why the church was converted into a parliament. And which church was converted into a parliament? Saint Paul Church was converted into a parliament in the Frankfurt, and where the 831 elected representative they assembled and they were discussing on the various topics. Okay, so in this way 18th of May को हमने देखा कि 18th of May 1848 को 831 representatives ने एक साथ वो बैठे और चर्च जो था सेंट पॉल चर्च उसको कन्वर्ट किया गया पार्लियामेंट में, तब्दील किया गया पार्लियामेंट में, और इस तरीके से पार्लियामेंट की पैरवी शुरू हो गई. The next one, they drafted. Who drafted? These German elected people, okay, which we call as a liberal one, because of the liberals' initiative, this parliament was being constituted. So they drafted the constitution for the German nation to be headed by the constitutional monarch. Under these conditions, they offered the crown to the Frederick William IV, King of Prussia, but he rejected it. तो ये डिसाइड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जर्मनी फॉर द जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये रखा गया कि उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा, जो कि हेड होगा, देश का हेड होगा, जर्मन नेशन का हेड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जब डिसाइड किया गया, तो ये भी डिसाइड किया कि फेडरिक विलियम फोर को, जो कि किंग ऑफ प्रशिया थे, उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने. बट ही रिजेक्टेड, ओके, उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बनना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. उल्टा उन्होंने क्या किया, he joined other monarchs to oppose the elected assembly. He joined other monarchs also to oppose the elected assembly. उन्होंने elected जो assembly थी, जो अभी भी recently बनी थी, जो मैंने अभी आपको बताया जैसे कि सेंट पॉल चर्च को कन्वर्ट किया गया था, तो उस सेंट पॉल चर्च को जो कन्वर्ट किया गया था, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो इन्होंने सारे अदर मोनार्क को ज्वाइन कर दिया और अपोज करने लगे इलेक्टेड बॉडी का, इलेक्टेड असेंबली का. Finally, the troop was also along with them,
and they called for the troop. And in this way, the assembly was forced to disband. इसलिए ये assembly जो elected representative की assembly थी, वो disband कर दी गई because the ruler was not ready, the monarch was not ready. He joined the other monarch also, and in this way, they sent the troop and they disband the assembly. So I think this is very clear. We discussed about question number 31A. Okay. Now let's turn to the question number B. Okay. What exactly it is talking all about. Now the question 31 का B जो है वो हमें बोल रहा है कि why was the Balkan region referred to as a power cake of the Europe prior to the World War One. Okay, let's try कि बल्कन रीजन इतना हॉट डिबेटिंग एरिया क्यों था, क्यों हम ऐसे समझते हैं कि बल्कन रीजन की वजह से या बाल्कन रीजन की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो कि चलो तो कोशिश करते हैं कि बाल्कन को समझने की। तो ये बाल्कन जो रीजन है, ये जो हम बी क्वेश्चन अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है द बाल्कन वॉज द रीजन ऑफ द जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे, वो आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जोगोवानिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो, ये सारे रीजन्स ये एक बाल्कन रीजन में होते थे। एंड ऑल द पीपल दोज हु आर इनहैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। ओके, इन सबको क्या बोला जाता था? स्लाव्स बोला जाता था। तो आज का जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये सब रीजन बाल्कन के पार्ट हुआ करते थे और इन लोग जो इसमें रहते हैं दे वर कॉल्ड विद द term Slavs. The second point, it tells you that the part of the Balkan was under the control of the Ottoman Empire. तो Ottoman Empire के अंडर में बल्कन रीजन हुआ करता था और in Balkan region में now these countries, these people, those who are living in the Balkan region, they were the idea of romantic nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire. So what we want to say here, all these people, those who are from the different groups, from the different ethnic groups, they were demanding for their own nation state. And with this, when they were demanding, it means the Ottoman Empire region will be disintegrated. That is but obvious. तो ये अभी यहाँ पर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव topic हो गया because all the groups which was existing under the Balkan region, they were demanding for their nation state, they were demanding for their independence, they were demanding for their own country, and they were demanding from the Ottoman Empire. तो naturally Ottoman Empire इतना easily देगा क्या? नहीं। तो यही हमें समझने का है कि they were demanding for the independence. The third point, it tells you about that one by one, all these people, no, the Romania and all these regions or these ethnic groups which were there, one by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. Okay, तो एक के बाद एक ये independence declared हो गए, बहुत सारे nationalists they broke out away from the control and declared the independence. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territorial region at the expense of the other. Now, in the Balkan region, as they were demanding for their independence, they were also demanding for the more territorial region, and that's why there was a jealousy between groups, between different ethnic groups, and everybody was demanding for the more territorial region. The fourth point it tells you about matters were further complicated because the Balkan also became the scene of big power rivalry. During this period, there was an intense rivalry amongst the European power over the trade and colonies. Now, this is very, very important. अब एक तरफ है जो बाल्कन के अंदर का एथनिक ग्रुप्स है, दे वर डिमांडिंग फॉर द मोर टेरिटोरियल रीजन एंड देयर वाज अ जेलसी बिटवीन दीज ग्रुप्स। ओके, अब हम देखते हैं कि जो यूरोपियन के बिग कंट्रीज थे, ओके, यूरोप के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थे,
Now they were demanding, they were thinking that these areas, which were the part of the Balkan, these areas should come under their control. They were trying to colonize these areas so that they could able to expand for their trade. Okay, they would get this area to expand their trade. That was their intention. So in this way, the European countries, they were thinking and they were helping these regions so that they could able to occupy these regions and later convert that area for the trading purpose. In this way, they want to expand their trading areas. The fifth point, it tells you that each power, such as Russia, this was a big power during that time, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkan. They want that the just now the country which got independence from the Ottoman Empire, the region should be under their control and extending its own control over the areas. They want that their control should be exist there. This led to the series of war in the region and finally the First World War took place. So because of these big countries, as they were very much interested in the Balkan region, and they want that these regions should be under their control and these areas should be under their control and they should use this area for their trading purpose. In this way, the rivalry like came there between these three groups, amongst these two, groups. And lastly, because of this, the First World War took place. So I think this is very clear the importance of Balkan region, such a disputed area, because of this region only, there was a rivalry all over the Europe. Inside the Balkan region also there was a rivalry, jealousy, and this invited the First World War. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या कहता है। नाउ 32 में भी हम देख रहे हैं कि दो सेक्शंस है, दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 32 के, ए और बी पार्ट है। तो यहाँ हम पहला पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ्टन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी stability. At this time, this system allows a variety of interests and opinion to enjoy the political representation. Justify the statement with the relevant points referring to India. मल्टी पार्टी सिस्टम ये बहुत ही मेसी सिस्टम है बिकॉज जब मल्टी पार्टी सिस्टम रहता है तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अराइज ज्यादातर हो जाती है तो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस रहते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बिकॉज लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जिस्टिंग तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है तो इसका वो बोल रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द रेलेवेंट पॉइंट्स रिफरिंग टू इंडिया बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री वेयर द मल्टी पार्टी सिस्टम इज देयर तो जस्टिफाई विद रेफरेंस टू इंडिया ओके मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि बहुत ही मेसी सिस्टम है एंड इट लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी ऐसा क्यों तो उसको जस्टिफाई करना है तो ये हमें पहला बता रहा है सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन with the failure of the political party to perform their function well. Political party, we have seen that in our countries also the multi-party system is there, and we found that that there is a failure of political party to perform their best functions. They are not performing the best functions. The question is expressing here. So we have to analyze the statement with the arguments. What are the reasons why their performance is not up to the mark? So let's try to analyze these two questions and try to get the answer. तो पहला हमारा है कि इंडिया जो पहला ए को हम लोग पहले आंसर ढूंढने की कोशिश करते तो आंसर जब हम ए का ढूंढ रहे हैं तो जो पहला पॉइंट हमें पता चल रहा है दैट इज इन द सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द वेरियस पार्टीज coming together in a coalition. Both the political party they came together just to form the government. That kind of a government is called as a coalition government, and we know all these things. So when several parties in the multi-party system join hands for the purpose of contesting election, this is very important. So and winning the power. तो जब बहुत सारी political party एक साथ आती है election से पहले, okay, for contesting election togetherly and for winning the power, okay, to gain the power. So such kind of a group is called as the alliance or the front, okay. तो बहुत सारी political party अगर election से पहले एक साथ इलेक्शन लड़ने के लिए आती है और उनका मेन मकसद है कि टू एक्वायर द पावर
to acquire the government, to form the government, then such kind of alliances, such kind of a group is called as an alliance or a front. Okay, so for example, in India, there are three such major alliances existing in 2004. Parliamentary election. The first one is the National Democratic Alliances, which is BJP's national NDA, जिसको हम कहते हैं. The United Progressive Alliance, जो UPA कहते हैं, and the Left Front. So these are the three alliances which were formed in 2004 elections. The third point it tells you about the multi-party system often appears very messy and leads to the political instability. क्योंकि बहुत सारी political parties रहती हैं, so it is very difficult to get the majority, and that seems very messy, and that sometimes leads to political instability also because togetherly they have to form the coalition government. That sometimes creates disappointment with each other, and that will bring to the instability. At the same time, this system allows a variety of interests and opinion to enjoy political representation. तो जब coalition government बनती है एक साथ बहुत सारी political party they come together. So different kind of opinion of different political parties, different ideologies are existing. They come together and they form their own opinion to enjoy the political representation in the government. The fourth point, it tells you that India has evolved a multi-party system because the social and the geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even three parties. No system is ideal for all the countries and all situations. So in India is such a big country, diverse country. It's very difficult for any one political party to get the majority. And if two and three political party they're coming together, and it is also said that it is like very difficult to get the majority, especially for any one political party, because India is such a huge country, it's a vast country, and no system is ideal for all the countries and all the situations. So this we have done with the question number 32A, and now try to learn about 32B. जब हम 32B को समझने की कोशिश करते हैं तो इसका पहला पॉइंट बोलता है कि since the parties are the most visible face in the democracy and people blame them for whatever is wrong with the working of democracy. Most of the time when the things never happens with like us, like the wish of or like our desire, then we blame on democracy. We not blame on democracy, we blame on political parties. So there are major areas where the working of the political party faces the challenges. तो जो सबसे बड़ा challenge एक political party के लिए है lack of internal democracy. So inside their political party only there is a lacking of internal democracy. The democracy is not there inside the political party. How? There is a concentration of power in one or the few leaders at the top. तो कुछ political party में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है और उनका ही बोलबाला होता है दे एक्चुअली डिसाइड्स एवरीथिंग ओके सो पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप parties do not keep membership registered, do not hold organization meeting, and do not conduct the internal election regularly. So they are not conducting the election, they are not maintaining the records, they are not maintaining the registers. Moreover, then loyalty to the party principle and policy is the personal loyalty which becomes more important. So if any one person is becoming very loyal to the political party, then that person's value is little bit more in the political parties that we have observed. The leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. And these big leaders, though are very loyal to their party, they usually take the decision on the name of political party. Since one or the few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. तो जो लोग कंटिन्यूसली लॉयल दिखाते हैं और बहुत साल तक लॉयल रहते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी तो दे आर द एक्चुअली द डिसीजन मेकर्स एंड दोज हु आर डिसअपॉइंटेड और डिसएग्री विद द लीडरशिप उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है टू कंटिन्यू रिमेन और टू रिमेन इन द पार्टी
पॉइंट सेकेंड हमें क्या बोल रहा है? तो पॉइंट बोल रहा है कि डायनेस्टिक सक्सेशंस है इनसाइड द पॉलिटिकल पार्टी और इन द पॉलिटिकल पार्टीज। इन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली। जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन करते हैं, जो पार्टी बनाते हैं, उन्हीं की पॉलिटिकल मतलब उन्हीं के सक्सेसर्स ये टॉप लीडर्स रहते हैं। Most political parties do not practice transparent and open procedures for their functioning, and if it is difficult for an ordinary worker to rise to the top, this is bad for the democracy, since people do not have adequate experience or popular support come to occupy the position of power. तो यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो टॉप मोस्ट लीडर्स है, दे आर फ्रॉम द डायनेस्टिक सक्सेशंस and they take the decision, and the simple representative, it becomes difficult for him to rise at the top. And this is not like because they do not have adequate experience or popular support, so to occupy that position in the political party, it becomes very difficult for them. The third thing, which is mentioned under the third point, that is money and muscle power. ये बहुत ही important है, money and muscle power. तो जिनके पास पैसा और जिनके पास power होता है, they become more prior to win the elections. So since parties are focusing only on the winning elections, they tend to use the shortcuts to win the election. They nominate the candidate who have or can raise money, and thus are able to have influence on the policies and decision of the party. Okay, so most of the time we have seen that the those who are giving and funding the political parties, so they once they come into power, they make the policies according to them only. Okay, so those who are possessing the money, they have a better opportunity to influence on the policies and the decisions of the party. So that is again the flaw of the political party. The next fourth point is no meaningful choices. There have been a decline in the ideological differences amongst the party. They agree more on fundamental aspects, but differ only in the details. So, on how policies are to be framed and implemented, sometimes people cannot even elect different leaders as the same set of leaders keep shifting from one party to another party. So people do not have a choice because the leaders, what they are doing, they are shifting from one political party to another political party, and the common people they get confused what exactly they have to do. So there is an ideological difference, and at the same time, among the ideological difference among the political party, they agree more on the fundamental aspects. Okay, but in detail, the policies are to be framed and implemented. Some of the political people cannot even elect different leaders as the same set of leaders. They are keep changing from one political party to another political party. So these are the flaws of the. So let's turn to question number 33. अब 33 में भी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ए हमें बता रहा है, वो पूछ रहा है, स्वाति वांट टू स्टार्ट अ terracotta artifacts store in her village। तो एक स्वाति नाम की लड़की है जो अपना खुद का टेराकॉट आर्टिफैक्ट का स्टोर खोलना चाहती है एक गांव में। She wanted to supplement her income to raise the standard of living of her family। वो ये बिजनेस इसलिए करना चाहती है just to increase her um, raise his income and to maintain the standard of living of her family। How can the bank and the cooperatives help her, and helping such people will lead to overall development of the country? क्या बैंक ऐसे कंडीशन में स्वाति को मदद कर सकता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे कैन हेल्प द स्वाति और किसी भी आम इंसान को इस देश में will lead to the overall development, because if such people they are getting the opportunity to raise their standard of living or to get success in the business, तो surely that will enhance the development of the country। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, डिस्क्राइब सर्कमस्टेंसेस दैट ड्राइव इंडिविजुअल टू सीक लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो इनफॉर्मल जो सेक्टर्स है उससे मतलब उससे क्या होगा, द सर्कमस्टेंसेस बताना है दैट ड्राइव इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल क्यों ड्राइव होता है
ऐसी जगह से लोन लेने के लिए जो कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। इनफॉर्मल जैसे कि बैंक नहीं, ओके, मनी लेंडर्स या रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे लोगों से लेते हैं तो दैन बी कॉल्ड एज ए इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। तो चलो हम पहले क्वेश्चन नंबर 32 का ए को ऑब्जर्व करते हैं। तो 32 का ए ऑब्जर्व करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि स्वाति जो कि एक टेराकॉट आर्टिफैक्ट की स्टोर बनाना चाहती है, खोलना चाहती है इन द विलेज। सो बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मनी। तो पहले तो भाई बैंक ही अन कॉपरेटिव ही उसे पैसा देना चाहिए, नीड टू लेंड द मनी टू स्वाति, देन ओनली शी कैन स्टार्ट द बिजनेस। This would lead to a higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. Okay. So this actually needs a very high income and many people could then borrow cheaply from a variety of needs. तो जब हमको बहुत सारा पैसा लगता है तो हम अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेने की कोशिश करते हैं। They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. Okay, तो जब ऐसा कुछ हमें करना है, हमको पैसा चाहिए, okay, so we borrow cheaply from the variety of needs. So what we can do, we could grow crops, we do business, we set up the small scale industry, etc. Okay, once we get the loan from the cooperatives or the banks. So this was the third point. Then the fourth point, this could help the new industries or the trade in the goods. This will prevent Swati from falling into the debt trap. So, agar they could set up the new industries, okay, or trade in the goods, this will prevent the Swati from falling into the debt trap. तो अगर स्वाति कोई न्यू इंडस्ट्री बनाती है या ट्रेड करती है गुड्स का, तो जिस उससे क्या होगा, स्वाति क्या करेंगी, वो डेट ट्रैप में जाने से बच जाएंगी। ओके, और इफ शी विल सेट अप द न्यू इंडस्ट्री और द ट्रेड इन द गुड्स, दिस विल प्रिवेंट स्वाति फ्रॉम फॉलोइंग इनटू द डेट ट्रैप। डिपेंडेंस ऑन द मनी लैंडर्स, तो वो मनी लैंडर के पास नहीं जाएंगी। अगर उसको बैंक या कोऑपरेटिव्स आसानी से लोन दे देगा तो वो अपना बिजनेस आसानी से खोल पाएंगी, और जो स्टोर खोलना चाहती है वो खोल पाएंगी, और वो मनी लेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, एंड द ट्रेडर्स पे भी वो डिपेंड नहीं रहेंगी। इसका मतलब है वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड देयर बाय मल्टीप्लाइंग हर इनकम विच वुड लीड टू हर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट रहेंगी, जिसकी वजह से वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगी अगर वो बैंक से या कोऑपरेटिव से लोन लेंड करती है तो। फिफ्थ पॉइंट जो हमें बता रहा है वो है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि जब हम बैंक के पास जा रहे हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड गेट द लोन at the least interest. Okay, so the cheap and affordable credit is crucial for the country's development because that will help the people to borrow or to lend more money from the banks. Okay, so interest rate कम होना चाहिए, this will help ना केवल स्वाति को बल्कि और भी कई लोगों को फायदा होगा। जब हम बी की क्वेश्चन नंबर बी की बात कर रहे हैं तो इसमें बोला गया है कि इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर इमीडिएटली फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। तो ये इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प जो है वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि जरूरत होती है तुरंत और जरूरत जल्दी से पूरी हो जाती है इनफॉर्मल में। एब्सेंस ऑफ कोलैटरल, तो आपको कोई देना नहीं पड़ता है, कोलैटरल दिखाना नहीं पड़ता है जब आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। फिर तीसरा हमें कह रहा है कि अनअवेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है जब आप फ्रेंड से, मनी लेंडर से या रिलेटिव से पैसा ले रहे हो। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड इरेगुलर इनकम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे आर फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड्स, दे आर पुअर, so that's why the informal economy है, irregular उनकी income होती है, that's why they just want to take the money from the families, money lenders and relatives. फिफ्थ रीजन हम देख रहे हैं कि क्यों लोग इनफॉर्मल वे में ही पैसा लेना पसंद करते हैं, तो लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो क्योंकि जब हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लेते हैं तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, कोलेटरल देना पड़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं। But another, like all these points are actually very, very important. So because of all these factors, people
Especially poor people goes to the money lenders, relatives, and the friends, which we call as the informal sectors. अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। एक सोर्स आपके पास दिया गया है और इस सोर्स में आपको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए। तो हम पहले देखते हैं कि वो सोर्स आप जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि हु पब्लिश द बुक द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि नटेशा शास्त्री जो थी, उसने एक्चुअली नटेशा शास्त्री ने ही ये किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है, फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। सो दिस नेम यू हैव टू रिमेंबर, you have to remember the name of this book and the name of the writer, okay, which is there in the um, paragraph also. So the second question, ये actually source based question है। तो second question में हम देख रहे हैं who believed that the folklore was a national literature, and it was the most trustworthy manifestation of the people's real thoughts and characteristics। तो किसने लिखा है फोकलोज, जो कि एक नेशनल लिटरेचर बना और ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एक्चुअली दिस क्रिएटेड द थॉट प्रोसेस। तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बहुत सारी फोकलोज ली, अलग अलग एरिया से कलेक्ट की, उसको बुक में कंपाइल की, एंड दैट एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ द पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। The third question of the source-based question, that is interpretation of Indian history, help in creating the nationalism, substantiate the statement giving the reason। तो देखो बहुत सारे बिकॉज हमने क्यों री इंटरप्रेट किया अपनी इंडियन हिस्ट्री को, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, पहला कारण जो उसमें बताया गया है, जो ब्रिटिशर्स थे, दे थॉट दैट इंडियंस आर प्रिमिटिव एंड बैकग्राउंड, एंड दे वर continuously telling us that when they came here, they civilized us. Okay? तो ब्रिटिशर्स ने हमेशा हमारी हिस्ट्री को प्रिमिटिव माना, हमें प्रिमिटिव माना और हमें बैकवर्ड किया, समझा, इसीलिए हमने अपनी इंडियन हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया। Second reason is therefore Indians started to search their glories past and discover the art, architecture, science and mathematics। तो हमने क्या क्या किया, हमने हर एरिया में डिस्कवरी की, हमने हर एरिया में रिसर्च किया। जैसे हमने अपने पास्ट को समझने की कोशिश की और हमें पता चला कि हमारी इतनी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री थी। हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कवर्ड किया, जैसे हमने जीरो को इन्वेंट किया, या हमने बहुत सारी चीजों को लेके आए, हमने बहुत सारे आर्ट, हमारे आर्किटेक्चर को समझा, हमने साइंस कौन सा हमने इजाद किया, या मैथमेटिक्स में हमने कैसे जीरो फाइंड आउट किया, ये हमने समझा। वी गेव दिस थिंग्स टू द वर्ल्ड। तो हमने जब री इंटरप्रेट किया इंडियन हिस्ट्री को, तो तब हम ये सब चीजों को जान पाए। ठीक, तो ये हमारा सोर्स बेस का पहला क्वेश्चन था। नाउ लेट्स टर्न टू द सोर्स बेस का सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 35। अगर आप यहाँ पर फिर 35 क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि वी हैव टू रीड द सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स ट्राई व्हाट एग्जैक्टली इफ यू रीड द होल सोर्स you'll come to know। तो इसमें हमें पूछा गया है, पहला जो क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट है, दैट इज हाउ डू वुमेन कलेक्ट वाटर इन राजस्थान। ये एक्चुअली ज्योग्राफी से लिया गया है। ओके, वो औरतें कैसे पानी कलेक्ट करती थी राजस्थान में। हाउ डू द वुमेन कलेक्ट द वाटर इन राजस्थान। तो वुमेन कैसे कलेक्ट करती थी एंड स्टोर द वाटर बाय बैलेंसिंग मैनी, जैसे कि मटका, इवन पॉट्स को वो कलेक्ट करती थी, एंड ट्रैवल द लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट द वाटर। तो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती थी, क्रॉस करती थी, एंड जस्ट टू गेट द वाटर। और कैसे कलेक्ट करती थी, मटकास में कलेक्ट करती थी। सेकेंड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, why is water scarcity in most areas caused? Why is water scarcity in most area caused? तो क्यों इतना water scarcity है, especially in the Rajasthan? What was the reason? तो water scarcity is caused due to the variation in the seasonal and annual precipitation, क्योंकि बारिश ही ऐसी कम होती है वहां पर, and because of this there is a water scarcity in most cases, it is caused by the। अब देखो, पानी नहीं आना और सीजनल ऐसा ही होता है कि पर्टिकुलर सीजन में वहां पर एक लिमिटेड प्रेसिपिटेशन होता है, एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। उसके अलावा भी और भी कई कारण हैं, जैसे
exploitation causes by over exploitation, excessive use, and the unequal access to water among the different social groups. So these are the another reason why there is a scarcity. Season and annual precipitation is a part, but at the same time excessive use भी हो रहा है, over exploitation हो रहा है of the water, and unequal access हो रहा है of the water to the different groups or the social groups of the Rajasthan. Third question is asking you about, do you think that the rainwater harvesting has been in the ancient practice? क्या ancient समय में भी क्या हम rainwater harvesting करते थे? और अगर करते थे तो we have to give the reason to justify your answer. Okay? कौन से पुराने जमाने में हमने rainwater harvesting की process अपनाए? किस राजा ने अपनाए? कौन सी जगह अपनाए? That we have to observe, that we have to search. तो ये क्वेश्चन था और इसका आंसर है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग डेवलप इन द एंशियंट इंडिया इन मेनी वेज। तो पहला है द फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही अ टाउन नियर इलाहाबाद बाय द नेम ऑफ श्री श्रीगंगापुरा has been a well developed and sophisticated channel system was harvest the flood water of the Ganga. Okay, this was done in the first century, okay, in Allahabad. And the second one was the Chandragupta Maurya Dam irrigation system. Okay, during the regime of or the reign of Chandragupta Maurya, dams were constructed, irrigation systems were done, and harvesting system was also exclusively made during that time. And in the 11th century also, one of the largest artificial lake at that time it was built in Bhopal, and this was known as Bhopal Lake. And in the 14th century, the ruler of Delhi, Sultanate Iltutmish, constituted a tank of horse cars for supplying the water to the Siri port. So all these things were constructed just to um, accumulate the water that we call as a rainwater harvesting in the different centuries from first century till the 14th century we have seen here. Now let's turn to the question number 36. Again, one more source is given to you, and this source is all about seeking more incomes. It means it is all about economics part. So let's try to find out the answer of these questions. So, do you think an enhanced income is the only goal of one's life? Substantiate your answer with one or two examples. अगर आप ये पूरा पैराग्राफ देखोगे जो कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किया गया है और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि हमको बहुत सारी चीजें और भी चाहिए, मतलब केवल हमें पैसा नहीं चाहिए होता, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू sustain a life, to live a better life. And that is equal treatment चाहिए हमको, equality exist करना चाहिए, freedom मिलना चाहिए, security मिलना चाहिए, respect for others is also equally important. And if we will have all these things, so then surely that will help us to live a good and sustainable life. So, do you think that the income is the only source that is the ultimate aim of the life? No. There are other things which is equally important, and they are equal treatment, freedom, security, and respect for others. Let's move to the question number second. Which factors would you consider before you accept a job? अगर आपको कोई भी accept करना है job को, तो कौन से factors को आप अपने consideration में लेंगे? तो यहाँ लिखा है कि I would consider accepting a job which gives me the equal required pay along with the facilities for my family and the time to spend with them. So, केवल payment is not the only thing. Accepting any job, before accepting any job, what is a very important? The pay is important. But apart from pay also, that is also the another thing which is important, that the facilities for the family. Okay. So what the facilities the job is providing to your family and how much time this job allows you to spend with your family members,
That is equally important. It should also have a good working atmosphere, enabling the good opportunity to learn and job security. तो केवल पेमेंट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होंगी, जैसे आपको गुड अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए to learn something new, and at the same time your job must be secure. So these are the special condition that is required apart from just having a payment in a job. I shall have a sense of security and the freedom. मुझे यहाँ पर जॉब करते समय या कभी भी आप जब जॉब करते हैं तो आपको सिक्योर महसूस होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप एक फ्री इंडिविजुअल है, आपको उस उस जॉब में आप अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करें, ये भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. नाउ लेट्स टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट गोल कैन बी कॉन्ट्रास्टिंग. ओके, सो डेवलपमेंट, हाउ द डेवलपमेंट गोल्स, बिकॉज सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स सब अलग अलग है, हमने पूरे चैप्टर डेवलपमेंट में ही ऑब्जर्व किया है. तो डेवलपमेंट गोल सबके लिए अलग अलग है. तो कौन से डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, तो जो डेवलपमेंट गोल मेरे लिए है वो डेवलपमेंट गोल आपके लिए नहीं हो सकता है. तो दैट इज वेरी डिफरेंट. तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और वो एग्जाम्पल ही हमको चाहिए था. तो एग्जाम्पल इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द ट्राइबल्स बट हु विल बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू इट. तो जो हम डैम बना रहे हैं मे बी वो डैम सबके लिए फायदे का सौदा है या इट्स अ गुड फॉर द कंट्री, बट फॉर द ट्राइबल पीपल इट इज नॉट द गुड ऑप्शन बिकॉज for them it is not the development. For the tribal people it is not the development because they are being displaced from it, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ के किसी और जगह पर डिस्प्लेस होना पड़ेगा. तो ये उनके लिए डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है ना. फिर आता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 37. अब क्वेश्चन नंबर 37 जैसे कि आपको भी पता है कि क्वेश्चन नंबर 37 इट कम्स अंडर द सेक्शन एफ. और इसमें आप देखते हो कि दो क्वेश्चन जो होते हैं वो हिस्ट्री के होते हैं और 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी से होते हैं. और इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो इसका मतलब पूरा सेक्शन एफ का जो सेट का पूरे क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क का होता है. तो हम देखते हैं कि हमको दो जो हिस्ट्री के प्लेसेस है वो लोकेट करके दिए जाते हैं. जस्ट वी हैव टू राइट द नेम. ओके, तो जो 37 क्वेश्चन है उसका जो ए सेक्शन है दैट इज फ्रॉम द हिस्ट्री, ये हिस्ट्री से बिलोंग करता है. तो यहाँ पर जब हिस्ट्री से वो बिलोंग करता है तो पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है द प्लेस वेयर द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्टेड. तो जहां ऐसी कौन सी प्लेस थी जहां से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, वो वहां से स्टार्ट हुई थी. और सेकंड वो बोल रहा है कि अ प्लेस वेयर गांधी जी वेंट टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स के लिए. तो गांधी जी ने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कहाँ से सत्याग्रह शुरू किया था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट किया था जो उनके ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल करियर था. तो जब हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या रियलाइज होता है, दो प्लेसेस आपको दिए गए हैं और इसमें से जो पहली प्लेस है वो हमने बताया कि जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो दांडी से, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा इन द मैप इट इज मेंशन देयर कि दांडी से उन्होंने स्टार्ट किया था. और जो मिल वर्कर्स का जो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो अहमदाबाद से स्टार्ट किया. सो ये हमारा पार्ट 1 था. Let's turn to the part 2 of geography. That is, again, the map is given to you. And in this way, you have to locate the places. Okay, you have to locate the places which is given here. So in this map, you can see that the Ahmedabad was there, and at the same time, Dandi was also existing. Now, in the second part, it is mentioned, it is asked to us that the Tehri Dam. तो तेहरी डैम कहाँ है आपको ये लोकेट करके देना है. ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तेहरी डैम आपको यही लोकेट करना है. You don't have to move to the Uttar Pradesh because sometimes we get inside the Uttar Pradesh, which is very wrong. The next one is Chennai Software Technological Park. ये आपको चेन्नई का आपको चेन्नई को लोकेट करके देना है. तो ये चेन्नई रहा, ये दिस इज द चेन्नई which you have to locate exactly near to the coastal region that you have to take care. Then the third one it is given to Chhatrapati Shivaji International Airport. Okay, तो शिवाजी छत्रपति ये बिल्कुल यहाँ है, इसको यहाँ वहाँ कहीं नहीं करना है. Most of the students they do the marking here, here and here, which is totally wrong. You have to be very careful about this Chhatrapati Shivaji airport. Then the last one is talking about
Narora nuclear power plant, and which is here. Okay, it is there. It is there in Uttar Pradesh. So that all about the map activity. Okay.